Okay. Yes, sir. So far we have discussed about sex determination. You understood about sex determination. Next point of discussion is mutation. Okay. So mutations are what? Mutations are actually the sudden, spontaneous, heritable change in genetic material of an organism is called mutation. So you have to keep three things in mind, two things actually. There is a sudden change और देर इज स्पॉन्टेनियस चेंज. सो म्यूटेशन क्या होता है ना कि जैसे जो डीएनए है, अगर लास्ट ईयर हमने पढ़ा था जब डीएनए के बारे में, 11th में जब आपने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम है भाई डीएनए जो होता है वो चार जो मोनोमर यूनिट है उसकी उनसे बना होता है. ए, ठीक है, ए इज फॉर टी, जी and C. So A is for adenine, T is for thymine, G is guanine and C is cytosine. Okay. So इस तरह से बना होता है and this is actually the code because जो अरेंजमेंट है इनका ATGC जो मोनोमर यूनिट्स है यही एक्चुअली डिफाइन करता है कि क्या प्रोटीन बनना चाहिए, क्या प्रोटीन नहीं बनना चाहिए और किस तरह से जो जीन है फंक्शन करेगा. तो अगर इसमें कुछ चेंज आता है, ठीक है, सो इट कैन अफेक्ट the functionality of gene. Okay, so this change is called as mutation. Okay, now these mutations can have no effect at all, can have some effect, can be lethal. Okay, so we will talk about that, but just understand that here there is a DNA sequence which is ATGC, and here then again there will be this sequence is mutated and there is a change at this position second. This is C. Okay, there is a change in that and it has become C. How it has become C, that we will talk in when we will discuss about molecular basis of inheritance. So this has become ACGC now. So maybe this can have some effect or maybe it can have no effect on the functionality of gene. So this is a sudden change and there is spontaneous, अपने आप हो रहा है. Okay, ये हमारे जो नेचर है, नेचर में अपने आप होता है ये. Then mutations are discontinuous source of variation. Discontinuous इसलिए बोला गया क्योंकि in some generation it may occur, in some generation it not occur, in some cells it may occur, in some cells it may not occur. So sometimes it is occurring, sometimes it is not occurring. So sometimes mutations are responsible for bringing variation in a species. Okay, and sometimes it is not. So it is discontinuous source of variation. So what is the continuous source of variation? Like in the first chapter we talked about reproduction, types of reproduction, asexual and sexual. In the sexual reproduction we say that sexual reproduction brings variation. So what is the continuous source of variation? Variation is the fusion of gametes and recombination. Okay, so that is the continuous source of variation. Anyways, so Hugo de Vries studied mutation in the plant uh, Inothera lamarckina, which is called as evening primrose. And so Hugo de Vries actually told that this mutation things occurs, and the term mutation was actually uh, given by Hugo de Vries, and mutation was observed by Morgan in the Drosophila. Okay, and then there is this person Mueller. He introduced mutations in Drosophila by using X-ray. So यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं. They can be spontaneous and they can be induced based on if they are occurring naturally or if whether we are inducing them. Mutation can be spontaneous or induced. Usually mutations are spontaneous. ठीक है. And then there is this person MS Swaminathan introduced mutations in wheat with the help of gamma rays to obtain good varieties. For example,
शरबती सोनारा, ठीक है। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। सो म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल पर भी हो सकते हैं और जेनेटिक लेवल पर भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लेवल पर म्यूटेशन हो सकते हैं। क्रोमोसोमल पे होंगे तो क्रोमोसोमल कहेंगे, जेनेटिक होंगे तो जेनेटिक म्यूटेशन कहेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं? इज द चेंज that occur in morphology of chromosome resulting in change in number or sequence of gene without any change in ploidy, ठीक है। या तो ये हो सकता है जिसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे, कुछ पार्ट उसका हो सकता है कुछ ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी चेंज है, मतलब क्रोमोसोम का जो साइज होता है, जो उसका शेप होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाए, ठीक है। सो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल, उसको कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन कहेंगे आर सडन एंड डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द जीन्स व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय विजिबल चेंजेस इन फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिनोटाइपिकली कुछ ऑब्जर्व होगा बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल आई कलर इन ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में रेड आई होता है और व्हाइट आई होता है, तो व्हाइट आई इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन जीन, ओके। So here, this is different types of mutations we will talk. मेरी आवाज आ रही है सभी लोग को? Yes, sir. ठीक है, तो ये समझ में आया सबको, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड म्यूटेशन क्या है, ठीक है। दो तरह की म्यूटेशन हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। देयर आर वेरी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। सो वी विल टॉक हियर वन बाय वन अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो पहला हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, कि ये क्रोमोसोमल लेवल पे होते हैं। तो इनमें भी दो अलग अलग टाइप के हैं। एक होता है हेट्रोप्लॉइडी, ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। और एक होता है एब्रेशंस, जो हमने बात की अभी, कि इसमें उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज होगी, साइज चेंज हो जाएगा, या शेप जो है उसका वो चेंज हो जाएगा, है ना। सो बेस्ड ऑन दिस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अलग अलग टाइप के होते हैं ना क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो ये जो अलग अलग टाइप होते हैं, इसमें चेंज आ जाएगा, उसको हम कहेंगे एब्रेशंस। और अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे हेट्रोप्लॉइड टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। So heteroploid is of two types. One is euploidy and another one is aneuploidy. So euploid case when there is presence of complete set of chromosomes. Okay, extra complete set of chromosomes. For example, let me take an example here. Suppose we have 2n number of chromosome diploid condition, and then this here we get extra copy of each chromosome. When we get extra copy of each chromosome, we call it 3n, like in the case of triple fusion of endosperm. Okay, like in the case of triple fusion. So in the triple fusion, there are three sets of chromosomes. One is coming from male and two are coming from polar nuclei. So that is triple fusion, 3n condition is there. This is the kind of condition which we will call it euploid. So this is euploidy, means true ploidy. True means the whole set is the extra copy of whole set of chromosomes are present. Okay, or in the same way there will be 4n. Okay, so that is called as tetra, and there will be 5n, 6n, 7n, like that. So up to 6n, like hexaploids are they survive. Or you can say that the most common example of hexaploid is wheat that we eat. Okay, that is hexaploid. So sometimes
when we introduce euploidy, that also increases the uh, efficiency, okay, of a variety or quality of a variety. So that is euploid condition, when we increase the whole set of uh, chromosome present in that organism. So from 2n to 3n, 4n, 5n, 6n, whatever, or 7n. So that is called as euploidy. Okay. Apart from that, there is another type of heteroploid which is called as aneuploidy. So aneuploidy is that when one or two chromosomes have extra copies. Okay. For example, usually we have 46 chromosomes. Okay. In 3n condition, you add 23 into this, so you will get 69 chromosome. 3n will have 69 chromosome. 4n will have 92 chromosomes. So that is increase in number of each chromosome. That is euploidy. In aneuploidy, we have 46 chromosome and there will be extra copy of one more chromosome. Any one more chromosome. Okay. So that is, this condition is called as trisomy. What is called as trisomy? Why trisomy? Because suppose, let me take an example. Suppose chromosome number 21 is there. Okay. And in the 46 chromosome, when we are saying, so already two copies are there. So chromosome number 21 has two copies. Two copies. Okay. And we are saying that there is a plus one. So plus one means, what I am saying is that there is one more copy of this chromosome. So there are three copies of 21 chromosome. Two copies plus one more. ये जो एक्स्ट्रा 46 प्लस वन लिखा है ना, ये लिखा है जो है वन, ये ये वन जो लिखा है, ये वन है कि 21th जो क्रोमोसोम है इसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है. ओके, आर यू गेटिंग इट? Copy 1 plus 1. Yes, okay, I am going to repeat that part. So 21th chromosome, we have 23, total 23 chromosomes we have. 21st chromosome, the 21st chromosome of any cell, okay, 21st chromosome has two copies, or you can say that every chromosome in this organism has two copies. But what I am saying is there is an extra copy of 21st chromosome. So in total 21st chromosome has three copies. Okay, two here and one here. So 2 plus 1, that is 3. Okay. Yes, sir. Yes. So that's why we are calling this condition as trisomy. We are calling this condition as trisomic. Okay. There can be a case where you can get like this condition. Sorry, it will be 1. So 1 plus 1 is there. Okay, 1 plus 1 condition means there are two chromosomes which has three copies. Okay, suppose 21st chromosome and suppose 19th chromosome is having three copies each. So that will be called as double trisomy. Okay, so that is, this condition is trisomic or uh, double trisomic. Got it? Now, how this condition can come? How this condition can come? Segregation. Yes, segregation. I told you earlier also that because of segregation, if
chromosomes do not divide properly, and if that type of gamete fuses, that will lead to change in chromosome number, and this will lead to disorder. Okay, this will lead to disorder. Okay, so we will talk about disorders also. So 21st chromosome, this like this. Now if there is a condition when there is a lack of chromosome, only one copy is present, so you say that 46 minus 1. Okay, there is a condition. Let me remove this. So there is a condition. Okay, 46 minus 1. So only one condition, one copy is present of some chromosome. So that condition will be called as monosomic. Mono means single. That chromosome is present in single copy. Because एक तो है ही नहीं, केवल एक ही है. Total chromosome will be 45. So that will be monosomic condition. Okay. And suppose there is this condition 46 minus 2. So what I am saying is that one pair is lost totally. एक पेयर ही नहीं है पूरा, है ना. तो इस ऑर्गेनिज्म में 44 ही क्रोमोसोम है. So this condition will be called as nullisomic, means null. There is one chromosome whose no copy is present. So null copy is present. That is called as nullisomic condition. Okay, got it? Are you getting it? फिर से समझाऊं? नो सर समझ आ गया. आगे चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज एब्रेशन. तो ये हुआ हमारा यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में दो कंडीशन हो सकती है, क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं. ठीक है. एब्रेशन में 4 टाइप के होते हैं. पहला होता है डिलीशन. ठीक है. तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. क्रोमोसोम है हमारे पास, क्योंकि ये क्रोमोसोम की बात चल रही है ना. सो क्रोमोसोम है हमारे पास एक यहाँ पर इस तरह से है, और इसका कुछ पार्ट डिलीट हो गया. ठीक है. सपोज ये बीच में से ये डिलीट हो गया, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया इसका. ठीक है. या ये टर्मिनल से डिलीट हो गया. तो अगर टर्मिनल से डिलीशन होता है तो उसे टर्मिनल डिलीशन कहते हैं. बीच में से कहीं होता है तो उसे इंटरकैलरी डिलीशन कहते हैं. ठीक है. दिस पार्ट विल बी डिलीटेड. या इसमें इस पोर्शन में जितने भी जीन होंगे, जो भी डीएनए होगा, वो डिलीट हो गया. ठीक है. या जो टर्मिनल एंड है, टेलोमियर है उसका, वहां से डिलीट हो सकता है, तो उसे टर्मिनल डिलीशन कहते हैं. सिंपल. सेकेंड इज इन्वर्जन. Inversion means some part is of chromosome is inverted. Okay, let me draw here one more chromosome. So here suppose यहाँ पर जीन है 1, 2, 3. Okay, and 4, 5. ठीक है. सो ये दो तरह का होता है इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक. इन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, दिस इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो गया. ठीक है. जो सीक्वेंस थी वो उल्टी हो गई, तो इन्वर्ट हो गई. सो 1 2 3 4 5 था, इन्वर्जन हुआ तो क्या हुआ, सपोज 4 5 में इन्वर्जन हो गया, तो 5 4 की जगह आ जाएगा, 4 5 की जगह आ जाएगा. मतलब क्रोमोसोम जो है उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह चेंज नहीं होगी, ना साइज चेंज होगा, ना कोई जीन घटेगा बढ़ेगा, बट उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा. 4th क्रोमोसोम पहले था, वो बाद में आ जाएगा, 5th पहले आ जाएगा. इसको बोलेंगे इन्वर्जन. ठीक है. दैट इज पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, जो आइदर इस आर्म पे हो या इस आर्म पे हो, दोनों आर्म पे नहीं होना चाहिए एक साथ. पेरिसेंट्रिक में क्या होगा कि दोनों आर्म पे एक साथ हो रहा है, मींस 3 4 की जगह आ जाए और 4 3 की जगह आ जाए. ठीक है. तो पेरिसेंट्रिक में ये बोलेंगे व्हेन देयर सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड इन द इन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड एज पेरिसेंट्रिक. ठीक है. सपोज यहाँ से 2 3 से 4 के बीच में इन्वर्जन हुआ, तो 4 यहाँ आ जाएगा 1 के पास, और 2 3 आ जाएगा 5 के पास. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन व्हेन सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड. ओके.
That is called as paracentric and pericentric inversion. Next is duplication. Third is duplication. So duplication, there is no type. So here, suppose in this chromosome, there is fourth gene is present. So it's one more copies comes here. Okay, so 2 copies of fourth chromosome are present. That is called as duplication. So some part is duplicated, not only one gene, some part of chromosome is duplicated. So that is called as simply duplication. Then fourth type is ट्रांसलोकेशन. अब ट्रांसलोकेशन दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच होगा. कैसे होगा देख लेते हैं. ठीक है. ठीक है, मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना लेता हूँ पहले 2, फिर हम इसके टाइप जो है सिंपल, इंटरस्टिशियल एंड रेसिप्रोकल, ये भी बात करेंगे. सो इसमें ही समझ लेते हैं यहीं पर. सपोज जो 5th क्रोमोसोम है, सॉरी ये जो क्रोमोसोम इसमें जो 5th जीन है या ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से निकल के इस क्रोमोसोम पे चला गया. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन. यहाँ से यहाँ चला जा गया. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. सिंपल ट्रांसलोकेशन. ठीक है, कॉर्नर पे यहाँ से निकला और इसके कॉर्नर पे जाके जुड़ गया. दैट इज कॉल्ड एज सिंपल ट्रांसलोकेशन. सपोज ये जो जीन है, ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का, निकल के बीच में कहीं लगता है इधर, तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन. कि यहाँ से निकला और बीच में कहीं दूसरे क्रोमोसोम के बीच में कहीं जाके जुड़ गया. दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन. और तीसरा है रेसिप्रोकल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन. उसमें क्या होगा, ये भी जा रहा है अगर यहाँ, तो ये भी जा रहा है यहाँ. ठीक है, मींस दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. इज इट क्लियर? एब्रेशन समझ में आया सभी को? Yes, sir. So this is about chromosomal mutations. Now we will talk about genetic mutations. ठीक है, तो genetic mutation में 2 टाइप के हैं. There are point mutation and there are indels. ठीक है, point mutation में क्या होगा, जैसे हमने बात किया था कि suppose A है, so A is converted into some other nucleotide. Suppose it is converted into G. So that is called as point mutation. किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, एक जगह पर, किसी एक जगह पर एक पॉइंट में चेंज, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, इसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन. ओके, अब ये होता है 2 तरह का. ये पॉइंट म्यूटेशन का एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन होता है 2 टाइप का. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप का कैसे होता है ये देख लेते हैं. लेट मी इरेज ऑल दिस. यू सी, यू नो प्यूरिन एंड pyrimidine. ठीक है, प्यूरिन pyrimidine आपको पता है, पता है. सो व्हेन देयर इज प्यूरिन, 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से हैं 2 प्यूरिन? और लेट मी टेक इट. pyrimidine 2 तरह के होते हैं, C एंड T. ठीक है, सो अब यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको कि अगर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है. ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन. ठीक है, ट्रांजिशन. ट्रांजिशन में क्या होगा, PU टू PU मीन्स प्यूरिन टू प्यूरिन और PY टू PY. ठीक है, PU टू PU और PY टू PY, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन. क्या समझ आया PU टू PU और PY टू PY में?
बोलो क्या समझ आया? adenine and guanine are getting. फिर A to G or G to A, that is called as PU to PU. Okay, and C to C or C to T, that is called as PY to PY. This is called as transition. Are you getting it? This is called as transition. इसका जो दूसरा टाइप है that is called as ट्रांसवर्जन. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, PU to PY और PY to PU, that is called as transversion. Okay, so either A to C होगा या A to T, ठीक है, और T to C और G to T. A can be mutated to C or T. In the same way, G can be mutated to C or T. That is purine to pyrimidine transition. In the same way, pyrimidine to purine, so T to G, T to A और C to G और C to A. Got it? Are you getting it? Yes, sir. Yes. That is called as transfer. Is it clear to everyone? Yes, sir. Babina is trying to speak, but I'm not, we are not able to get her voice. Okay, so this is what transition and transversion. Now there is, so ये हुआ point mutation, उसमें substitution होता है. Substitution दो तरह का होता है, एक होता है transition, ठीक है, this is transition, and एक होता है transversion. Okay, so these are different types of substitution examples. Now there is another type of genetic mutation which are called as indels. So indels actually दो words को मिला के बनाया गया है, insertion and deletion. Okay, so suppose you are having sequence of nucleotide here. Okay, let me take a sequence here. Okay, so we have a sequence. Okay, so we have a ATGC sequence, and what I am saying is there is an insertion. So let me take the copy, and what I am saying is there is an insertion here. At this place there is a insertion of G. Okay, so this is the insertion which is you can see in the bold. Okay, are you able to see? So you see that the length of this sequence is increased by one nucleotide. That is called as insertion. Okay, and in the same way, suppose from here this A is deleted. This A is deleted. So I am putting a star here so that you can understand there is a deletion. So are you getting it? So this is our sequence. I am writing a sequence. Okay, here this is insertion, and here I am writing the deletion. Okay, got it? So
Got it? So you can see that there is increase in one nucleotide or there is a decrease in one nucleotide, or maybe 1 2 3. Okay, so this is called as insertion, this is called a deletion. So insertion and deletion, see, one more important thing you must understand here, that when you are reading this sequence, okay, this sequence is always read in the uh, three three nucleotides at a time. So let me color it here yellow, and then this part is green, and up to here only, and this part is suppose this pink, or, and this is like that. Okay, so you see these, when this DNA is read, it is read in three nucleotides at a time for the expression of a gene, that we will discuss in next chapter. But for now, just see that, like, when you are reading this DNA, this DNA is read, you have to read three nucleotides at a time. So ATG will be read together, CCC will be read together, TAC will be read together, GAC will be read together. Now if there is a insertion here, so up to CCC it's okay, okay, it will remain ATG CCC, it's okay. Here this TAC, in place of TAC, TGA will be read. Okay, in place of this TGA will be read. So let's take it as a blue. Okay, so there is what, this frame which we are reading, this frame as three nucleotides together. This frame is shifted just because of an insertion. In the same way, if there is a deletion, this A is not there, so these three nucleotides will be read together. Okay, so don't think that there is a star, it means there is something. Star is just to show that there is a deletion. So there is a deletion here, and because of that, in case of TAG, TCG will be read. So TAC is a code, TGA is a code, TCG is a code, and these codes can give rise to different informations. So the same sequence is there, just because of insertion and deletion, the whole sequence is changed. Okay, up to here that's okay, correct. Okay, after this there will be problem. So there is TAC should be there, now there is TGA. Next जो तीन nucleotide है, that will be GAC, but that should be GAC, but there that will be CGA. After that TTA should be there, but there will be CTT. Here that will be after that TCG, but here it will be ATC and AT, and here it will be GAT. So you see there is a shift in this reading frame. So insertion and deletion introduces a phenomena which we call as frame shift mutation. Okay, are you getting it? Let me write it here. Got it? So insertion and deletion are insertion of one nucleotide at any place or deletion of any nucleotide at some place, and because of that this reading frame is changed, and that's why it is called as frame shift mutation. Got it? Yes, sir. Yes. Everyone got it? Yes, sir.